Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. So we are doing the topic prime factorization. Sir, may I drink water? Yes. Okay. We are doing the topic Yes, prime factorization, and in this topic we have already understood. We have already done some practice that how to do prime factorization. We have done the practice also. Some questions, not many. Some questions we have done. Okay. Some Yes, more sir. questions. Some more questions we will do today. Okay. So I'm giving you the numbers. You will do the prime factorization of these numbers. I'm writing the numbers. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good beta. afternoon, sir. First And number we is have, 60. sir, we have to send the answer in chat box. No, you do these questions in your copies. I will ask you. Okay. So four questions I'm giving you of prime factorization. Okay. The first number is 60. Second number is 128. Third number is 196, and fourth number is 150. These are the four numbers. Start doing the prime factorization of these numbers. Okay. How much time will you take to do the prime factorization of these four numbers? 10 minutes? No, sir. जल्दी कर लोगे? Sir, 7 minutes. No, sir. Okay. चलो बेटा करो. 10 minutes I'm giving you. Okay. In 10 minutes you do the prime factorization of all the four numbers. Okay. And after that I will be asking you कि क्या आंसर आए आपके, and I will also help you and I will also show how to do answers. I will tell you. Okay. चलो start it. Write down the question also in your copy. You have to write down the question. Yes. Mohammad Zian. Yes, sir. हाँ कुछ कह रहे हो बेटा? No, sir. अच्छा ठीक है. Okay. So note down the question in your copy first, and उसके बाद start doing. हाँ जी मोहम्मद जियान. Sir, how we, फिर से बोलो बेटा. How we क्या? sir, how we write this? Sir, Write down sir, the we have first to number write 60. all numbers do the prime factorization हाँ of. अलग अलग सारे numbers का करना है. I will tell you how to do. एक मैं आपको बताता हूँ. First one. Okay. Sir, I am saying we have to write do the prime factorization of all numbers. Yes, Sir, yes. before of all numbers. Yes, yes. All the numbers. Arnav Singh. Yes, Arnav. Sir, I want to say that, sir, please do third one. I cannot understand it. बेटा all are of the same type. Try करो आप. I will tell all of them together. Okay. सारे एक साथ बताओ. ठीक है. प्रत्युष पाल. Sir, we have to only write the answer or formula also. जैसे मैं आप करता हूँ देखिए. I am showing you how to do the first one. Okay. You will first of all write the question. Then start with the first part. First part के साथ start करेंगे. उसके बाद you will do the prime factorization. पूरा process दिखाएंगे.
and then finally you tell the answer कि क्या आंसर आया. Okay. Any other problem? Anyone? Yes, कोई problem है किसी को? नहीं? Sir, I have. Yes, ask. Sir, this, sir, second, third, and sir, second, third, and fourth. Sir, I cannot do, sir. Because what? I cannot do because? Sir, I cannot do because of these are of 3 numbers. कोई बात नहीं बेटा, सेम तरीके से करना है. Why are you afraid of them? All are of the same type. बिल्कुल सेम है, बहुत easy है. Okay. First, we will divide 60 by the smallest number, which is the smallest prime number. 2. तो 60 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. Yes, we can divide 60 by 2. 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, we get 30. भूल गए आप लोग कैसे करना है? So now 30 can we divide 30 by the smallest prime number, which is 2. सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अगर नहीं हो रहा है फिर नेक्स्ट नंबर से देखेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा फिर और आगे वाले नंबर से देखेंगे. So is 30 divisible by 2? 2 से डिवाइड होगा. Yes, 2 से डिवाइड होगा 30. So divide 30 by 2, you get 15. Okay. Now Sir, I 15 is understand now. 15 is divisible by 2? No, 15 is not divisible by 2. So you divide 15 by 3. 3 से divide हो जाएगा. Yes. So 15 divided by 3 is 5. 5 आ गया. Now 5 is not divisible by 2, not by 3. It will be divided by 5 only. 5 divided by 5 is 1. Okay. So answer क्या आया? First part Excuse answer me, क्या sir. होगा? This is the first part. What is the answer? How will you write your answer? 60 equal to 2 into 2 into 2, 3 2, into 3, 5. 5. This is the answer. Understood? ऐसे करना है. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, we have right do prime factorization of the following numbers. Sir, इतना हमने लिख लिया तो हम सिर्फ नंबर 1 डाल के नंबर 2 हाँ, डाल के yes, सिर्फ yes, नंबर yes, लिख yes. के फिर आंसर लिख सकते हैं. Yes. आपको पूरा ऐसे जैसे मैंने करा है ऐसे ही करके दिखाना है पूरा. ठीक है? Sir, like if the 120 in 128, we will 2 in the 2 to the 4. First you will divide by 6, 2. sir, we will put 6 and 8 will left. We will put 8 downside. No, 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 no. First you write the number 128. ये वाला सामने आ गया. First you write the number 128. First, second part. 128 लिखेंगे. Now draw 2 lines like this. Or you will check this number is divisible by 2. Yes, 2 से divide कर सकते हैं. Yes, कर सकते हैं. So 128 को 2 से divide करके क्या आता है? What do you get when you divide 128 by 2? पूरा divide करके बताओ क्या आएगा? 64. 64 आता है बेटा. 128 divided by 2 is 64. ठीक है? Yes, So sir. 64. Now you divide 64 by 2. 2 से divide करोगे 64 को क्या मिलेगा? 32. ऐसे ही आगे करते रहेंगे. इसको आगे कंटिन्यू करिए आगे. Excuse me, sir. Yes. सर मैं कह रहा था सर ऐसे करके लिख सकते हैं सर. ये यहाँ पर बस नंबर 1 डाल के 60 लिख दिया है. अब इसके नीचे आंसर लिख दें Yes, yes, yes. सर, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा लिखना पड़ेगा. हाँ, पूरा लिखना है. पूरा लिखना है. खाली आंसर नहीं लिखना है, पूरा लिखना है. सर ओके? पूरा लिखना है बेटा, पूरा लिखना है. कैसे कहूँ मैं आपसे? सर सिर्फ आंसर की बात नहीं करना. नहीं 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 नहीं. हाँ, मैं कह तो रहा हूँ ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये भी लिखना है. ठीक है? ऐसे लिखना है जैसे मैंने करा है, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है. 128 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2. कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7. सर आंसर कैसे करना है ये तो पता है. हाँ, सर डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इतना लिखे या फिर सिर्फ 60 लिख के करना है आंसर. सिर्फ 60 लिख के कर लो. उनको भी भुला देगा. सर सिर्फ यही तो 60 लिख के कर लो बेटा. कर लो. मैम
sir, who know, but Gyan will forget them also. नहीं नहीं मैम बेटा, जिनको सर जिनको पता होगा वो भी भूल जाओ। ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? चलो करिए, सब लोग करो। Why they will forget if we नहीं don't नहीं, know? अरे रिमेन क्वाइट ऑल ऑफ यू। चलो कीप ऑन डूइंग।
Have you all done now? सबने कर लिया? सर Sir, मुझे आ I ही नहीं want रहा to है. ask. I need बेटा sir third one. चलिए. So I'm The time, showing sometime give more. some more time you want. बेटा, okay, I am doing all the 4 here. Sir, yesterday. All the 4 I am doing here, and I will give you the answers of all the 4. चलो देखो. Sir, second, third, and fourth, sir, tell in explain. Sir, tell in detail these three. देखिए, फर्स्ट वन इज 60. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. टेल मी व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ऊपर लिखे हैं प्राइम नंबर, मैंने इसलिए लिखे हैं ऊपर प्राइम सर नंबर. 2. 2 is the smallest prime number. So check 60 is divisible by 2 or not. 60 2 से divide होगा? होता है 2 से divide? 60 is an even Yes, number. sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So it is 2 divisible by 2. तो आप 2 लिख लीजिए. Now do you know how to divide 60 by 2? 60 को 2 से divide करोगे, मालूम है क्या आएगा? You will get 30. So write 30 सर here. 30. ठीक है. Now you draw another line. Okay. Now 30 को अब चेक करेंगे. 30 को अब again you see the smallest prime number 2. 30 is divisible by 2. सबसे पहले 2 से ही चेक करना होता है सब. Yes, sir. Yes, sir. So yes, again you divide 30 by 2, you get 15. 30 का हाफ कर लीजिए. कितना होता है 30 का हाफ? 15 होता है. 60 का हाफ 15. 30 होता है. 30 का हाफ 15 होता है. 15. Now 15 is divisible by 2 or not? No, sir. No. 15 2 से divide नहीं होगा. 15. Sir 3. अब next number कौन सा है 2 के बाद? Next prime सर number is 3. सर 3. 3 से हो जाएगा. So divide तो 15 3 से by हो जाएगा. 3. 15 divided by 3 is 5. 5. 5. So सर इसको 5 5 से डिवाइड करना 5 तो को कितना है? 5 is not divisible by 2, not divisible by 3. It is divisible Sir, by 5. 5 से. 5 सर बाय से. 1. So ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60. अब आप लिख लेंगे लास्ट में 60 equals to 60 1 minute. 60 equals to 2 into 2 into 3 into 5. ये आंसर हो गया. ठीक है. Now the next number. What is the next number? The next number is 128. So 128. It is divisible by 2. Yes. 128 को 2 से Yes, divide sir. करो. Tell me what will you get? Sir if you divide 64. 128? 64. Yes, you will get 64. Sir, Divide. sir, this one is very big. Yes. 64. 64. Again check by 2. It is divisible by 2. Sir. Yes. Yes, sir. क्या आएगा? Sir, 64 को 2 से divide करके you get. 32. Sir, 32. I have done this one. Very good. 32. Is it divisible by 2? Yes, sir. Yes. Yes, Again yes. So you get what? Sir 60. Sir 60. 16. Huh? 16 Yes, sir, again you 2 check. Is it divisible by 2? Yes. Yes, Again sir. yes. So, 8. Now you again Sir, check 8 is divisible by 2. Sir, Yes. 2. You get 4. Sir 4. 4 को फिर से 2 से करेंगे क्या मिलेगा? 2. 2 को फिर से 2 से करेंगे Sir क्या 2 को मिलेगा? 2 से करेंगे. 1. तो 128 is 128 equal to ये 2. कितनी बार 2 लिखा है यहाँ पे? 2 7 times. 7 times लिखा है? 2 into लिख 2 लो. into 2 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 6. 2 into 2 into 2 into Sir, 2 Sir, 2 into 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 2. बस. ठीक है. चलिए वेरी गुड. चलो नेक्स्ट नंबर. What is the next number? The next number is 196. 196. Okay, 196. It is divisible by 2. Yes, the number 196 is divisible by 2. When you divide 196 by 2, you get 98. 98 मिलेगा. 2 से divide करो. Divide करना तो आता है सबको. 2 से Sir, divide then करके 49. Sir, again Sir, you then divide. 49. Very good. Again you divide 98 by 2, you get 49. Now sir, now 49. 7.
अब एक मिनट Sir, देखिए, 7. मेरी बात सुनिए ध्यान से Sir, सारे 7. बच्चे। 49 is not divisible by 2, not divisible by 3, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा 49, not divisible by 5, ना 3 से होगा, ना 2 से होगा, ना 5 से होगा। 7. Is it divisible by 7? Yes, 7 से 7. डिवाइड करेंगे, so 49 divided by 7 is 7, again divide by 7 you get 1, आंसर आ गया। 49 equals to, sorry, 196, 196. 196 is equals to 2 into 2 into 7 into 7, 196. clear? लास्ट वाला बचा है, Yes, sir. लास्ट वन, 7. लास्ट वन, So what is last one? लास्ट वन is 150. 150, 150 you divide by 2, again 150 is divisible by 2 first, so when you divide 150 by 2 you get 75. Now It's 7. 75 15 is divisible by 3. 3 That's बेटा, 3 3 3. 3। Sir, easy method is समझ ही 50. नहीं आता है इनको। नहीं, इजी मेथड नहीं करना है, यू हैव टू डिवाइड ओनली बाय प्राइम नंबर्स, सर स्मॉलेस्ट कोई इजी स्मॉलेस्ट मेथड नहीं से करना है। कन्वर्ट। हाँ, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फर्स्ट, फिर स्लोली यू विल इंक्रीज, यू विल go to the next prime number and then go to the next prime number in the increasing order, ऐसे चलना है आपको, ऐसी बीच में से कोई भी नंबर उठा के नहीं करना, ओके? Otherwise it will not be called prime factorization, okay? ओके So 75 divided by 3 is 25. Okay, now 25 you will divide by 5 because it is not divisible by 3. So 5 से divide करेंगे you get 5. सर 5 5 Again divide by 5 you get 1. So answer आ गया 150 equals to 2 into 3 into 5 into 5. equals to 2 into 3 Sir, into 150 5. is equal to 2 into 5. 3 into 5 into 5 is equal to 1. ठीक है, वो नहीं लिखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई एम गिविंग यू सर प्लीज वेट फॉर 2 1 more minute। questions. चलिए जल्दी करिए, नोट करिए जो बच्चे नोट कर रहे हैं। सर प्लीज। सर मेरी तो लाइनें नहीं बन रही थी बीच में, तुम्हारा बनाई है। सर प्लीज सी माय आल्सो। Yes, beta, I'm giving you the next question, okay? I'm giving you the next question. Will you be ready? Now, okay. First part, only 2 parts, okay? The first number is 80. Second number is 147. बस इतने आसान से 2 numbers हैं. Start doing.
Okay, so some of you have done. किसने कर लिया? Sir, I have done. Sir, I have done. Done. Sir, I have done. Okay, very good. Sir, I have done. Okay, some of you are Sir, still doing. sir, it is right. I will Sir, tell right? you. I will tell you tomorrow. It is right or not. We will discuss tomorrow because some students are still doing. Let them do. Okay. Let them do. Sir, only 1 minute is left. कोई Sir, बात only नहीं, 1 minute. कल discuss करेंगे. It is how to do. What are the answers? We will discuss all of them tomorrow. Okay. Okay, sir. Sir, we can discuss one.